So good morning all of you. We all have gathered over here in order to organize one event that is an innovative implementation of AI projects in the college campus and its showcase under AI for Atmanirbhar Bharat. The government of India has taken the initiative in order to promote the AI and in the college campuses, and in view of the India AI Summit Impact 2026, we are organizing this activity as a Ministry of Education MIC activity in IIC. So we will have the project demos under this. We are having experts with us, Dr. Praveen Shirsagar sir. He is an expert in AI and ML, and Professor Mirza Beg sir. He is expert in the AI, machine learning and data science. So we are organizing the project competition here in our campus, and projects are totally based upon the AI and its implementation, and we are going and our experts are going to do the review of the projects, and based on that we will felicitate our students and give them the prizes based on their project efficiency. So I am handovering the mic system to our reviewers. They will take the review of the projects. From 6M IT, and my project is all about AI integrated context-aware chat application. So nowadays you guys are using like WhatsApp and Telegram chat applications. So basically what my project is gonna do is like you have seen the movie like Iron Man. So there was an AI assistant, his own AI assistant, which is named as Jarvis, and he have developed furthermore AI for his personal assistants. So basically what my project is gonna do, like let me show the. It's easy. Just one. Yep. This one project guide. You just write it down. The professor Namrata Nagpure, Yep. ma'am, remove it. Okay. Harshvardhan Kulkarni, no, you just note it down. I'll do that. Harshvardhan Yep. Kulkarni, you just write professor. Okay. Same in the HODIT, Professor MM Beg, sir, remove it. Okay, sir. I'll do that later. Okay. So next of all, when I'm trying to let me tell you that how I reached to this particular problem statement. आजकल क्या होता था कि मेरा डे टू डे लाइफ में मैंने प्रॉब्लम सेट जो फाइंड आउट किया कि जब हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या टेलीग्राम यूज़ करते हैं इसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, सो उसमें हम मोस्ट ऑफ द इशू क्या फेस कर रहे हैं कि हम सारी चीज़ें हैंडी टाइप कर रहे हैं, ठीक है, टिल बिकॉज AI अभी आ चुका है तो हम उसको वॉइस कमांड्स देकर सारे टास्क ऑटोमेट करवा सकते हैं. सो मैंने वहाँ से आइडिया उठाया एंड इसको रिलेट किया कॉन्सेप्ट को विद आयरन मैन मूवी, जो जाविस उसका टास्क ऑटोमेट करता था. सो आई गॉट द इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर. सो मेरा बेसिकली मोटो ये है कि एक ऐसा एप्लीकेशन डेवलप करना जो कि फुल्ली वॉइस बेस्ड हो. एंड वॉइस बेस्ड इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आके उसको इंस्ट्रक्शन देगा और किसी की भी इंस्ट्रक्शंस वो लेकर जो भी टास्क हमने दिए वो एग्जीक्यूट करेगा. इसमें बेसिकली पर्पस ये रहेगा कि आपका जो वॉइस इंप्रेशन है वो ऑन डिवाइस ऑन द एप्लीकेशन रिकॉर्ड होगा, जस्ट लाइक योर फिंगरप्रिंट एंड योर फेस आईडी जो आप उस फेस को मतलब मोबाइल को अनलॉक करने के लिए यूज करते हो. तो सिमिलर वे आई विल ट्राई टू फिगर आउट दैट हाउ द वॉइस इज गोना यूज फॉर वॉइस एम्बेडिंग एज वेल एज इट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉइस. सो द person cannot replicate that particular voice similarly, like we have mimicry artist. So mimicry artist भी उस voice को mimic करता है, तो उसकी भी accuracy मतलब जो डिटेक्शन की है वो इंक्रीज करनी है. स्टिल इस पे अभी डेवलपमेंट प्रोसेस चल रही है, बिकॉज अगर हम देखा इसके डेवलपमेंट प्रोसेस बैंकिंग सेक्टर में चल रही है, बिकॉज हायर उसमें अगर हम लार्ज अमाउंट ऑफ मनी अगर ट्रांजैक्ट करते हैं, कोई बिजनेसमैन है तो उसका रेटिना स्कैन, फिंगरप्रिंट स्कैन और वॉइस एम्बेडिंग, तो वो चीज़ें वहाँ पर अभी डेवलपमेंट फेज में चल रही है. नेक्स्ट मेरा इंट्रोडक्शन में अभी वही था, एम एंड ऑब्जेक्टिव, डेवलप वॉइस असिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट अवेयर चैट एप्लीकेशन. बिकॉज कॉन्टेक्स्ट अवेयर इसलिए बिकॉज हम नॉर्मल टोन में बात करते हैं, गुस्से में बात करते हैं, तो वो टोन उसने कैच कर लेना चाहिए कि नहीं अभी मेरा मूड कैसा है, ताकि सामने वाले को रिप्लाई भी उसी वे में जाए. बिकॉज हम वो टाइपिंग में हम इमोजीज देते हैं, तो सिमिलर वे में वो चीज़ भी इंटेंट रिकॉग्नाइज होकर सामने वाले को मैसेज चला जाए. ये मेरा मोटो है. नेक्स्ट कमिंग टू द डेवलपमेंट पार्ट, तो इसमें टेक्नोलॉजीज में फिलहाल यूज़ कर रहा था React Native for the application development, and in future I'm gonna shift on Flutter because I wanted to launch the fully fledged production ready app on Play Store. Then in the backend part I'm gonna use like APIs of Google Gemini API for context based chatting, because it gives you a vast amount of data on which is trained already, and the personal
पर्टिकुलर वे में हमें मैसेज करता है, हमने उसको कॉन्टेक्स्ट डिसाइड कर दिया तो उस हिसाब से आपको मैसेज करता है. लाइक आई सेड, इफ यू एक्ट लाइक एज अ प्रोफेसर और एक्ट लाइक एज अ टीचर, एक्ट लाइक एज अ स्टूडेंट, then he will definitely try to act like that, and we can also change the settings also. Then this is all about the database for I'm going to use Supabase for the production for the MVP development. Now I'm mentioned that MongoDB I'm going to use, but it is when the production ready app is going to develop. Next is, this is what my architecture. I have designed this architecture fully by my own, that how the product is going to work and what are the things that I'm going to use. Like for this I have used draw.io, which is an online open source platform where everyone can go and generate their own architecture, whatever they have in their mind. Then next, coming to the next point, that is this is what the UI of my project. This is how it looks like. Like currently we are using WhatsApp and Telegram, and Genjis are using them based on their own preference. But I wanted to target multiple people, right? This is what the app which helps you to whenever you are driving the car, whenever you are cooking in your kitchen, like you don't want to use your messy hands to operate your phone. So in that case, you can directly operate by using your voice. Okay, so the second case, just I missed about that. That is, I wanted to tell you about something that is like if the app is continuously running on your device, that will consume a lot of memory, right? So for that, I have resolved one thing, that is mainly coming from wake up word. I'm going to add one wake up word so the device can active for a particular amount of time, like 20 seconds, and within that particular amount of time, if the user is going to give the whatever the instructions he wanted to pass to the application, he can pass right that, and after that 20 seconds the app will shut down. Now, Again, yeah. When we are working on to a voice, no? Yep. At that time, okay, we are finding so many different noises. Yes, sir. Okay. So there is also one It's got very difficult to identify yeah. who is what speaking and who are giving what instructions. Right. So how you are going to reduce the noises which are coming from background? There is one more solution I have designed for that. That is, we have seen that we have OnePlus mobile phone. As we can see, there is an ability that it reduces the noise cancellation because the speaker is seated on the front side. So if you are going to talk with any person on your phone, so the background noise is not going to capture out there. Like same technology I was trying to figure out to install in this, because if the background noise reduces, then the accuracy definitely increased. So the second thing, if the solution in the case of you are driving, so you are using always headphones. So headphones has inbuilt function that is noise cancellation. So the voice can directly go to your mobile phone. So you don't need to operate it manually. Whenever you got a message from, like currently, if I'm coming to the college. Show us the demonstration. Demonstration, sir. Right now, only the prototype of UI is built because the R&D work is still under development, because a lot of features are there. And when I'm gonna shift to production ready app, I have just 1 year, so I can develop this particular project as a MVP. So because the most of the work is gonna done on the voice modeling, because I wanted to load the voice impression on it, and still the development in this field is still under development, not a completely full-fledged is not development. Prototype is still under development. Yes, sir. And now for the prototype, I have used an AI called as Rocket.new, which is an open source online platform. But the thing is, it charges money for its if you want to add more features. So if I'm going to show you like which AI I'm talking about. This is what the AI. So I have developed 2 applications right here. Like one is my final year project. This is what my final year project. And second was I have developed for the hackathon, which is SIH hackathon, Smart India hackathon. That is Smart Attendee. So that is also involved in AI integration. But for now, I'm discussing about this particular project. So this is what the AI. You just need to give your instructions. And if you want to, if you don't want to upgrade this, without upgradation, we can also get the code. There is an hack. There is a code base. It loads the code base here, and you can modify the code based on your preference. Like I have the knowledge about that particular technology, whatever I'm gonna use over here by the AI. So I can edit directly in the code base and then copy the code and directly paste into my folders, whatever folder structure I have created in my desktop. So I can use over there. And second thing is I have used anti-gravity as my assistant, debugging assistant. So it helps me to find out what are the errors, and it helps me to fetch the errors.
This is what the UI of my application. Still, if you can see, there is a lot of things are missing right here because UI is also not completely ready. This is AI hub feature which is not in WhatsApp, not in Telegram. You can only find out this particular feature in my application, where the AI hub gives you an ability to change the voice assistants. Like Gemini has their own voices, GPT has their own voices, and similar way, whatever the text or chats comes to your messaging, so the AI helps you to summarize them, and weekly summarization. If you have prioritized your task based on company, if you are a member of a company, then he will schedule some task for you, so it will also notify you. This is what the features. Next thing that I have added is nothing but this. This is how the UI looks. This is what the group. This is what the group platform. It's similar to the Instagram. That if you are going to move to the Instagram, you have to see the stories, right? तो सभी की stories आपको ऊपर में दिखती है. तो similar way में अगर मैं चाहूँ यहाँ पर मेरे पास कुछ group members है तो group members की list में यहाँ से access कर सकता हूँ सीधा. Because अगर मैं जाऊँ यहाँ पर WhatsApp में, तो WhatsApp में ये feature नहीं है कि WhatsApp में अगर मैं किसी एक group में open करता हूँ, ये मेरा group है, अगर मुझे किसी member को ढूंढना है, ठीक है, into WhatsApp or Telegram. WhatsApp and Telegram, because they have their own particular base. That so I am trying to target the peoples who want to use this application, like changes and targeted persons like medically handicapped persons or like paralyzed patients, and day-to-day life that peoples who are driving, so and they are constantly in like business fields. So in your project here, you have shown the architecture. Yep. And you are using NLP, LLM part Yes. and chat GP, that is chatbot. Yes, sir. So have you gone through this the basic stuff of NLP? Yes, sir. Basic stuff of NLP like tokenization of words and then word embedding. So all these stuffs are I have already learned in my previous semesters. So I am trying to implement those things till my final year, so I can develop this my production ready application on my own. So I can launch this as a application on Play Store. So this NLP, this I mean to say, Yes. how this chatbot interact with whatever we are talking. Yes. How this chatbot is interact with For your word. yes, I got Which that. prototype I got your idea. protocols is used. Yep. That's the thing. Different protocols yes. are used for this. I'm still under development. I'm still doing research on that which type of protocols that I need to use in this particular production ready app, because right now the main motto of me is nothing but to develop MVP, right? And before the semester, I have generated one more application, like my personal desktop AI assistant called as Alpha AI Assistant. So it is purely hard coded, and I have integrated the wake up word over there. And While taking any help with the chatbot, yes, any disturbances may arise. yes, background Of noise. course, background noise is there. So are there any provisions to avoid it? Right now, as per my research, I have gone through 10 IEEE papers. So I have seen that there are a lot of stuffs which may interpret the context like disturbance on during voice. But there is one model that has accuracy more than I have imagined. That is, I assume that is 95% of accuracy. Given the model name is Escape TDN. That model helps me to inbuild this. You are in Development phase. Yep. So when you are going to complete this? Within next semester, I think I can build the MVP till to the next semester. Still okay, lot of things to be do. Yep. To be done under. Because I need to focus more on voice embedding, because voice impression is not loaded. Then That is only the target. yes, right now that's the target. Only you have to buy. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Any suggestion? Anmanirbhar. Our project is centralized admission. Our project title is centralized admission system. It is we have made the system for the document. For
for easily accessing the documents, their hard copy. As you, PPT का PPT. so we have actually not made the PPT. Title is Centralized admission system. Centralized Admission System using AIM. In any government college, as you know, it is very hard for you like to submit your scholarship. You require your documents to like obtain your hall ticket. You require physically to be there. So this system remove all the manual work. In this system, you will getting this RFID, which will replace your student identification card. Inside this, you will receive all types of your documents like 10th, 12th, 11th, 12th, mark sheets and hall tickets. So our system works like this. Firstly, I will introduce to you my hardware. This is the EC200U, which is an LTE module which gives the LTE connection and calling connection to send the data to our server from our EC32 module. This is our RFID scanner which will read this card. So basically this system works like this. The student will receive an RFID card. In it will have all of his documents. So whenever he needs to have the hard copy of his document, our second system, here it is our second system, it will be inside the admin block, which will again have an RC receiver. Inside this, the student will tap the card and it will have the options of all of his background cards like 10th mark sheet, 12th mark sheet and 13th mark sheet. So he will like select that card and he will get instantly the copy of it from our admin block. So because we have built this system to reduce the problem we face inside our government college when we are doing our BCA, that we will have to submit our 10th mark sheet, 12th mark sheet and other types of document. For that we have to go to Xerox centers or other types of centers where we do not have any type of internet connection. Then we also don't have that copy and our submission is delayed on basis of that. So to reduce that, we have made this system. I will show you the working, then we will come back to the AIML part of it. So the student will receive an RFID instead of their identification card from the college. This RFID will be used as the storage for their all of the documents from 10th to 12th, then hall ticket. They can obtain it. Our secondary system will be put up in the admin hall. So there they can like directly tap their RFID card and obtain their hard copy of their required documents. So we will show you the basically working. so all hardware you have made it. Yes, sir. We have developed it. This is the EC200U module, which gives the LTE connection to the ESP32. It has an SIM of. We are using the carrier of GeoNet, so it will send an GSP tags along with it. Then ESP32, which connects to our backend. Then we have the ultrasonic sensor, which will sense whether the student has come into the range of the machine or not. Then this is the receiver for our RFID card. So I will show you how the data will be passed to our server and how the data will be fed to the machine. So in order to which I am saying like explaining you theoretically, in order to show it to you practically, once I will tap the card here, this machine will send the data, and to confirm that the data is being received, that is the documents we have been getting, this mobile should receive the call. So as you can see, the mobile has received the data. That means the data has been sent to the server and the machine has fetched it. So let me get the call. So this is our C++, which we have written for our ESP32 module to connect to our backend. Then this is our front end for the institute level. Then this is the front end for the student level. So here we have used the MERN stack, and we have been working with the MLs. Like we are like normally training our model with the like same data, supervised learning, as you know, where the data is being labelized and it is of the same type and following the linear regression. So here our front end is work like that. The students which are from different departments of their respective college, they can post about their department, they can post about their colleges, that how the placement records are there, how the different types of data are there. Then the students which are coming from the different colleges and they are thinking about the future, that we should take the admission in this college regarding their respective department, they can check their respective performance here on this community hub. And this is our
for front end for the institute level, where they can create an RFID card, then upload their documents, and the student can access us for the hall tickets and all. As you can see here, institute profile, they can add the different courses inside their institute, then application for the RFID, then documents which can they add in your respective RFID cards. Then the Is there any constraint on the size of the file? no sir, currently it not. We can send any size. Yes sir. Yes sir. So, basically this RFID has some limits. It basically stores up to 5 KB, but it only stores the URL of your document. So the heavy work of that document storing and all, it is basically done on inside your server, not on the RFID. So Required. yes sir, the server is required. We have actually made the server, but due to we have submitted this project in another hackathon, but due to traveling, the server got. Basically, they need to hire some space. Yes sir. So this was our topic. Any questions? My sir? question is, you are saying this, you have developed all this. Yes, things. sir. So you can you tell me the cost of this? The total cost of making this both is around 5,000. 5,000. Yes sir. The cost of this device? The ultrasonic sensor, it is around 700 or 800. 800. Yes sir. The what I can say, the most prized module is the EC200U, which we have custom made it. The PCB which we have designed it and sent it to the PCBs. They have sent us the PCB, and inside it we have configured everything. So basically this is the highest value price inside our project. This alone cost us around 3,500. Thank you sir. And this is my teammate Abhishek Duijor, and we created an application called Vartalap for secure AI-powered cross-language chat application. Basically in India there are language barrier in cultures, I speak Marathi. If someone speaks any other languages, we cannot communicate with each other. We need a common language. But if I don't want to learn that common language, that's a barrier. To avoid that barrier, we created a chat application which can analyze sentiments and translate there. And it also end-to-end encrypted. That means the privacy is fully secured. It is a language translator. Yes. Chat application. But it also translates according to the preferred language of the chat. Security is there. Just like WhatsApp, that is end-to-end encrypted. Next. We uses AES plus RSS key security algorithm to secure the chats. For individual chat, the AEC key is generated, and then that key also get encrypted using RSA algorithm. And we use Gemini AI to analyze sentiments of message and translate them into preferred languages. That the core features are, that is end-to-end encryption using AES 256 key generation algorithm and RSA 2048 for key encryption. And second is real-time translation. Due to Gemini AI, the translation and sentiment analysis is very quick. We don't need anything regarded to that. And also due to sentiment analysis, the translation of messages are very smooth. But any mistake may be happen in a sentiment analysis. If emoji is going to be sent, the emoji may be correct or may not be correct at any times. Then the prompt sent it as a neutral. No sentiment detected. We only implemented 3 sentiment: neutral, positive and negative. Positive sentiment color happiness and excitement, and negative is angry or
we created that application using Flutter for cross-platform development, and uses block qubits for data transmission for among the application, and the data is stored on our Firebase Firestore. And we also embedded secure storage that contain this private keys of AES algorithm. This is the flow of end-to-end encryption. First the key is generated, then AI process the for every user the public key is generated first. Then when we started messaging, the AI analyze the sentiment and translate the message. Then that both message, translated message and original message, get encrypted using AES algorithm. Then that key, AES key, got encrypted using RSA. Therefore there is a double key encryption, and that key is stored in secure storage. That means no one can access that key apart from the user, and only the public key is stored in Firebase storage, so that the communication is established. Is the same how is the message gonna send. User types the message, then Gemini translates it, then encryption, both message encryption, original and translated, and both device have to decrypt the message, because in storage the original and translated message are encrypted. To display that, we have to decrypt on both ends, from the sender's end and from receiver's end. Is the same thing. For that, this is the application. First you have to sign up or log in. Then if you have any contacts that also using this application, then go show here in contacts. Like I have I am chatting with him. I selected the language preference from here. For now it only contains 2 languages due to dataset limitation. I selected it as a Hindi language as my preference. So I got all my messages in Hindi, and if I send him hi, so after translation it will show there. The only challenge is that latency issue. Due to AI analysis on sentiment and translation, it takes much time to do that process. 3 to 4 seconds. And also and everything is stored encrypted here. So there is no storage of any kind of message on database, no plain text there. So what are the challenges you have faced here? The first challenge is latency, and the second challenge is that the model is on server. So due to that, some challenges like end-to-end encryption compromises sometimes. It's not fully intact because of the message sent over servers for analysis and translation. So we are trying. As you are going to deploy this project in a large model, supposed to be. So of course, these 2 issues we have to Yes. be resolved. So we need the specific local servers which are completely encrypted and no one can access it. Yes. So this 2 latency and the server, you have to take care. Yes. And you can deploy this your project in multiple language. Multiple applications: iOS, Android, web, and thank you, sir. So hello sir. Our team, my team name is Evo. We are 4 members. Yes sir.
सो हमने एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाया है और इस टाइटल और टाइटल है एनोमली बेस्ड सेफ्टी सिस्टम। तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो टोटली एंड्रॉयड बेस्ड है एंड कोर जावा में बना है। ये वुमन के सेफ्टी के लिए बनाया है। सो इसके जो मॉड्यूल्स है वुमन को सेफ राउट प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ एक मैं उसी के साथ साथ एंड ये पूरा एक ऐसा ऐप दिखेगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा पुराना UI है, ये नया UI है एंड देन ये आपको एक वुमन को जो भी हेल्प लगती है उसके अकॉर्डिंग ये ऐप AI को डिटेक्ट करता है। सपोज़ करो कि मैंने ये शोडाउन मोड दबाया है तो शोडाउन मोड के अकॉर्डिंग वो मेरे इन्वायरमेंट को सेंस करेगा। अगर वुमन कोई खतरे में होगी तो वो ऑटोमेटिकली मेरे जो भी ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट रहेंगे उनको मैसेज थ्रू या फिर जो ऐप थ्रू नोटिफिकेशन चली जाएगी। सो इंटेलिजेंट एनोमली बेस्ड सेफ्टी डिटेक्शन मतलब ये जो है डेविएशन को डिटेक्ट कर रहा है। जैसे कि सपोज़ मैं बाहर जा रही हूँ, सो आई नो कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी है कि मैं कुछ प्रॉब्लम में रह सकती हूँ, तो मैं जाने से पहले एक स्टार्ट मॉनिटरिंग कर दूँगी। सर सेम इसमें जो सेम स्टार्ट मॉनिटरिंग है वो सेम है, बस ये ओल्डर वर्जन है और एक नया वर्जन है। अभी यहाँ पे एक्टिवेशन शुरू हो गया। तो इसमें नहीं कहा जैसे कि अगर शेक करते हैं या फिर हम बोलते हैं कि हेल्प बचाओ तो उसके अकॉर्डिंग ये शुरू हो जाता है। इसमें सर सेटिंग में अपन ने क्या ऐप सेटिंग में जाकर नहीं क्या हम सेंसिटिविटी को अपन चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। अब जैसे कि शेक हो गया, अभी हल्का सा शेक किया तो वो शुरू हो गया, और उसको हम सेट कर सकते हैं पूरा प्रॉपरली। और इसमें भी सर सेम हो सकता है। सर देखिए, सपोज़ अगर मैं अभी प्रॉब्लम में हूँ तो हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबल कि मेरे साथ कुछ हो रहा है तो मेरा फ़ोन शेक होगा। तो अभी जब ये शेक हो रहा है तो वैसे ही इसने डिटेक्ट कर लिया है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ डेविएशन है नॉर्मल से, नॉर्मल जो एक्टिविटी है उससे। तो वैसे ही ये देखिए सर, यहाँ पे मॉनिटरिंग शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कोई और भी कर सकता है स्टॉप, क्योंकि नोटिफिकेशन आ रहा है तो कोई और स्टॉप ना करे। इसके लिए हमने यूज़र का जो फिंगरप्रिंट है वही लगेगा ताकि कोई और उसका इस्तेमाल ना कर सके। तो ऐसी सिचुएशन में एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि हमेशा हमें एविडेंस मांगा जाता है कि एक्चुअल में तुम्हारे साथ सच में कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। तो उस इंस्टेंट पे ये एविडेंस भी कैप्चर करता है। ये देखिए सर, अभी का जो एविडेंस है वो इसमें कैप्चर हुआ है। और सर इसमें जो नया मॉडल है इसमें सर जो नए फीचर्स है वो हुआ डिवाइस कनेक्शन एंड स्मार्ट डिफेंस। सर तो सर डिवाइस कनेक्ट में नहीं क्या, जैसे कि अपनी स्मार्ट वॉच होगी तो वो स्मार्ट वॉच के साथ कनेक्ट हो सकता है, जिससे कि जो हमारी हार्ट रेट हो गया, अगर किसी की हार्ट रेट कम हो गई, ज़्यादा हो गई तो उसके अकॉर्डिंग भी वो नहीं क्या सेट हो सकता है। तो प्रॉपरली नहीं क्या ये जा सकता है, मैसेज जा सकता है। सर इसमें सर हमारी वॉच कनेक्ट हो गई। अभी सर जैसे कि हार्ट देखना है हमें, तो यहाँ पे जैसे ही हार्ट रेट होंगी वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे शो होगी। अगर हार्ट रेट ज़्यादा है यानी कि 100+ है, जैसे कि अपन दौड़ते ज़्यादा तो अपनी हार्ट रेट बढ़ जाती है, तो अगर ज़्यादा है तो SMS जाएगा कि आपकी हार्ट रेट इतनी बढ़ चुकी है। और अगर हार्ट रेट कम है तो उसका भी मैसेज जाएगा कि आपकी हार्ट रेट कम हो चुकी है। सर 96 कनेक्ट हो रहा है प्रॉपरली सर। हाँ, जैसे ही कम या ज़्यादा होंगी वैसे आपको SMS वगैरह आ जाएगा। और सर इसमें नहीं क्या सेफ राउट का भी फीचर है। अगर वुमेन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है तो वो पाथ सेट करेंगे और वो पाथ नहीं क्या मतलब सेफ पाथ रहेगा। अगर वो पाथ के बाहर जाएंगे तो अपने आप SOS मोड ऑन हो जाएगा, जिससे कि SMS अपने पेरेंट्स को वगैरह चला जाएगा। और सर यहाँ पे पेरेंट्स मोड भी, पेरेंट डैशबोर्ड भी है, जिससे नहीं क्या जो अदर ऐप का जो चाइल्ड और पेरेंट लिंक हो सकता है। और यहाँ पे लिंक डिवाइस में चाइल्ड दिखेंगे कि कितने चाइल्ड लिंक है। और सर ये जो सेफ्टी है स्मार्ट डिफेंस, तो इसमें नहीं क्या सर हमने ESP32 और अपना वो मिनी शॉक मशीन टाइप कुछ तो भी बनाया है सर। फिलहाल के लिए ये तो मैनुअली है, बट इसको हमने ESP32 से कनेक्ट किया है सर। एक मिनट, जैसे इसको मतलब ऑन करने के लिए तो इसको ग्राउंड करना पड़ेगा, एक अपन साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी इसको शुरू करना पड़ेगा। तो
जैसे ही शुरू करता है अगर मैं किसी से टच करूँगा तो करंट लगेगा सर। तो करंट सर सामने वाले को लगेगा कि मतलब वुमेन को नहीं लगेगा, जिससे एक और सेफ्टी फीचर बढ़ जाता है। सर एंड ये तो हो गया बहुत बड़ा मॉडल। हम इसको कॉम्पैक्ट करके रिंग्स में या फिर ब्रेसलेट्स में डाल सकते हैं ताकि हम उसको कॉम्पैक्ट डिवाइसेस में भी वो अच्छे से करंट दे पाए एंड वो चल पाए। एक वेरिएबल हो सकता है वो इजीली हम उसमें वेरिएबल बना देंगे फ्यूचर स्कोप में, एंड वो कनेक्टेड रहेगा हमारे ऐप से, अगर ताकि हम कोई SOS में या फिर प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं तो सीधा हमारे ब्रेसलेट से सिग्नल जाके हम करंट वो ट्रांसमिट कर पाएंगे। सर वो छोड़ के सपोज़ ऐसे है कि हम प्रॉब्लम में वहाँ पर अगर हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम कुछ कर पाए या कुछ एक्शन कर पाए, तो उस टाइम पे हमारे जो ऐप है उसमें वॉइस असिस्ट है, जिसमें वॉइस असिस्ट जो है एक अगर मैं किसी को बोलती हूँ सपोज़ यश तो देखिए सर यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है, ये कॉल लग जाएगा जिस पर्सन को मैं मैसेज आएगा और कॉल भी जाएगा सर, और इससे जो मैसेज जा रहा है उसमें मेरी लोकेशन भी जा रही है कि उसे समझ में आ जाएगी कि कोई तो भी प्रॉब्लम में है। ये मेडिकल इन्फो भी जाएंगे कि आपकी मेडिकल इन्फो क्या है, जैसे कि अपनी मेडिकल इन्फो हो गई, जैसे कि ब्लड ग्रुप हो गया, अगर कोई एलर्जीज है वो सब हो गया, तो वो सब भी जाएंगे उसमें मैसेज के साथ, और लोकेशन भी जाएंगे। इसके अलावा पुलिस का भी है, अगर पुलिस बोलते हैं तो पुलिस को कॉल लग जाता है, एम्बुलेंस बोलते हैं तो एम्बुलेंस को भी कॉल लग जाता है। और सर वॉइस एजेंट तभी चालू होगा जब SOS एक्टिवेट रहेगा और हम कीवर्ड्स भी सेट कर सकते हैं कि हमको किसका नाम अगर हम बोलेंगे तो फिर वो SOS उनको जाएगा। और सर ये ESP32 अभी तो फिलहाल मैनुअली है, बट इसको ऑटोमेटिक भी हम कर सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे IP डालिए तो यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे लाइट लगेगा, जिससे कि ये सिग्नल भेजेगा अपने वो इलेक्ट्रिक शॉक वाले को, जिससे नहीं क्या वो शॉक वाला मतलब सिस्टम शुरू हो जाएगा। और शॉक वाला सिस्टम तभी शुरू होगा जब नहीं क्या SOS एक्टिवेट होगा, यानी कि वुमेन खतरे में होंगी। इसका डिप्लॉय कैसे किया? सर डिप्लॉय अभी तो एंड्रॉइड स्टूडियो से हम कर रहे हैं इसको पूरा। डिप्लॉय तो अभी तक हमने प्ले स्टोर पे नहीं किया, बट आप या फिर APK फाइल से भी इंस्टॉल कर सकते हो अपने मोबाइल में। हाँ सर, जैसे कि यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो हो गया, तो एंड्रॉइड स्टूडियो में अब जैसे कि मेरा डिवाइस कनेक्ट हो गया सैमसंग का, इसको रन जैसे करेंगे वैसे रन मतलब शुरू हो जाएगा और यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा अपने आप। तो इसके लिए अब व्हाट आर द चैलेंजेस यू हैव फेस? चैलेंजेस में सबसे इम्पोर्टेंट तो स्केलेबिलिटी है सर, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट हम अगर रियल वर्ल्ड में लाते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है तो स्केलेबिलिटी एंड डिप्लॉयमेंट का। तो ये प्रोजेक्ट को स्केलेबल करने के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा मशीन, जो पावरफुल मशीन चाहिए, क्योंकि एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है कोर जावा में चल रही, तो हमें एक ऐसी मशीन चाहिए होगी जो कि इंडिपेंडेंट हो एंड जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोड ले पाए, ताकि अगर सपोज करो कि हमें ये एविडेंस सर्वर पे भेजने हुए हैं तो हमारा सर्वर एक्टिवेट रह पाए एंड कनेक्शन एस्टेब्लिश हो पाए लो बैंडविड्थ पे। तो सबसे पहला तो ये कनेक्टिविटी एंड सर्वर मशीन्स का हो गया। एंड नेक्स्ट जो है वो अवेयरनेस का आता है। अगर ये मॉडल डिप्लॉय भी हो गया तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ये शॉक वाला उसको कॉम्पैक्ट करना, दूसरा ये हो गया चैलेंजेस हमारे लिए, क्योंकि इसको कॉम्पैक्ट करना थोड़ा सा हार्ड जा रहा है। अगर ये कॉम्पैक्ट होता है तो फिर वेल एंड गुड, बट हम देख रहे हैं। और सर इसमें एक सेफ्टी फीचर भी है, जैसे कि अगर वुमेन किसी लोकेशन पे है, जैसे कि अभी JD कॉलेज में है या फिर नागपुर में होगी, तो उसके अकॉर्डिंग सेफ्टी फीचर्स भी चेक करता है। उसमें नहीं क्या लोकेशन वाइज बताता है कि ये एरिया सेफ है या नहीं, जैसे कि उसमें नहीं क्या डे टाइम देखता है, अर्बन एरिया देखता है, SOS हिस्ट्री देखती है अपनी पहले की, लाइटिंग देखती है कि अंधेरे का टाइम है या सवेरे का टाइम है, उसके अकॉर्डिंग ये नहीं क्या एनालिसिस करता है और यहाँ पे अपना बताता है कि कितना सेफ एरिया है यहाँ पे। और उसके अकॉर्डिंग नियरेस्ट प्लेस है, जैसे पुलिस स्टेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, पेट्रोल पंप हो गया, उसके अकॉर्डिंग मिलता है। और यहाँ पे सेफ्टी पॉइंट्स मतलब देख सकते हैं एक। If we have to bring such kind of things or product in the market, can we bring it? Yes sir, बिल्कुल। Yes sir, definitely. So what are the tentative costs for the customer? सो टेंटेटिव कॉस्ट हमें एज अ कस्टमर तो कुछ पर कस्टमर तो कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि कस्टमर के तरफ फ्री जाएगा। हाँ यस सर, बिल्कुल। एंड ये कॉस्ट लगेगा एज अ सर्वर पॉइंट ऑफ व्यू हमें, क्योंकि हमें सर्वर अप एंड रन रखना पड़ेगा। एंड हमें अगर शेयर होस्टिंग लेते हैं या फिर कोई भी डेडिकेटेड होस्टिंग लेते हैं तो उसका कॉस्ट हमें बेयर करना पड़ेगा। एंड जब हम कोई भी एप्लीकेशन लेते हैं या फिर डिप्लॉय करते हैं तो उसका पर क्लिक का कॉस्ट आता है। अगर कॉस्टिंग की बात करूँ तो वो कॉस्टिंग एज अ सर्वर साइड पे जा रहा है। हमें अभी तक यहाँ पे कोई पेमेंट
मॉडल तो ऐड नहीं किया है, बट अगर इसमें हम एक पेमेंट मॉडल ऐड करते हैं तो ये प्रोडक्ट हम और अच्छे से एफिशिएंटली और स्ट्रॉन्ग सर्वर के साथ हम डिप्लॉय कर पाएंगे। सर बिजनेस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो प्रीमियम फीचर दे सकते हैं, जैसे कि ये ओल्ड मॉडल हो गया। अगर उसको आपको नहीं क्या और ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो आप परचेस करके ये नया मॉडल ले सकते हो, जिसमें हम थीम कलर या फिर नए फीचर्स हो गया। ये सर यहाँ पे उसका युवा है और सर इसका इम्प्लीमेंटेशन UI के साथ। सर और ये ऐप ना प्राइवेसी इन्वेट नहीं करता है, ये सिर्फ आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपके ट्रस्टेड हाँ ये सर, ये कोई डेटा सर्वर पे नहीं भेजता, लोकल पे ही रखता है जितना हो सके उतना, एंड देन जो भी एविडेंस रहता है बस एविडेंस को सर्वर पे लेके जाता है, एंड जो भी गेट एंड पुल रिक्वेस्ट हो वो बस सर्वर से आती है। सर ये इसका डेटाबेस है सर, जहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए हमने फायरस्ट्रोक और फायरस्ट्रोक डेटाबेस का यूज़ किया है, जिसमें यहाँ पे नहीं क्या नियर बाय हेल्प का भी फीचर्स है। अगर से किसी को हेल्प चाहिए, अगर से मेरा ऐप दूसरे के मोबाइल में इंस्टॉल है तो मैं यहाँ पे नियर बाय हेल्प डालूंगा, जिससे ही नहीं कि जो आजू बाजू या फिर जितने भी लोग हैं उनको नहीं कि एक पॉपअप मैसेज जाएगा कि इतनी दूर पे एक पर्सन है, उसको आपकी हेल्प चाहिए तो आप जा सकते हो। थैंक यू सर। So good morning everyone. Good morning sir. I am from CSC branch, final year, and we are presenting our project, and the title is predictive maintenance of machine component using AI and ML. So basically we are in this project we are using the electric vehicles. We are implementing the electric vehicles, there is a model of EV vehicle, so we are working like Chetak, we are using the model Chetak. So in that the machine component is there, so the component is failure like brake, engine, maintenance. So the machine will detect and it predict that what happens, it gives the alert notification, so we can service. What different algorithm have you used in this machine learning algorithms? Did you use any algorithm? No sir, we have using for front end we have used HTML, CSS, JavaScript, and for back end we have used the framework Flask technology, and for database we have used SQL. So you have given the name for this machine learning and the AI. Yes. What is the use of this? For the AI. You have given the title machine learning and AI. Yes. You have never used any machine learning. EV का जो machines है, the machine component is there. EV vehicle that have parts, and we have made this software that it can it is an admin panel. Where is that? This is the admin dashboard that will manage. If you have any The problem and what changes you need to do. it will be predict what maintenance is needed for battery, brake, temperature. So first of all, okay, you have to connect this app onto the vehicle. Then only it will show you Yes. that this is what the issue. It is there. Title is not justified. Showing the title is what is the title? Predictive maintenance of machine component using AI and ML. Machine component using AI and machine learning. Machine learning. Machine learning. And So machine learning. Machine learning algorithm should be here actually. So what AI you have used under this? What machine learning algorithm you have used? That's why I am asking. Tell us the algorithms, what exactly the flow will be there in the algorithms, how the issues are detecting by your algorithm, the vehicles. Sir, for example, this is total vehicle 6. It's have issues. मेरा कहने का मतलब समझ गया क्या? Algorithm, what algorithm? If you are using this going to this title machine learning, if you are using,
So at least you have to use that algorithm. If you are using ML, talking about the coding. forget about the coding. If you are using that word machine learning, so at least you have to use 2 or 3 algorithm in the entire coding. Sir, we have using the framework Flask for backend. That is not that is different part. ठीक है. Is what working? Yes. This is the user management, sir. थोड़ा सा टाइटल चेंज करना पड़ेगा. It is okay. इनका प्रोजेक्ट वर्क हो रहा है. टाइटल चेंज करने के लिए बोला. सर दिस इज मेंटेनेंस मैनेजमेंट. पेंडिंग रिक्वेस्ट अगर वो अप्रूव्ड, द मॉडल इज अप्रूव्ड, कंप्लीटेड. थोड़ा सा मेरा सजेशन रहेगा इसमें थोड़ा सा टाइटल में चेंजेस करना पड़ेगा. सी सर, इफ यू हैव टू प्रिडिक्ट, बाकी ओके है. बाकी आपका प्रोजेक्ट ओके है. टू प्रिडिक्ट आपको चेंजेस करना पड़ेगा. ML yes, yes. What do you have used for the coding? JavaScript, HTML, CSS. So whatever you are showing, you have interface any hardware device before that? No, sir. It is totally of software. Software. So how this you are showing this? So we need to input the information when we have purchased, when we have done the last. Okay. With the help of this dashboard, if you are keeping the speaker, we are getting this. The admin portal will be on the company and the user will be us. If user put every purchasing detail, last Sir, see, this is all requests. So brake service is there for this model. High priority approved. Tire rotation is there. It will. The issue is for the problem is tire issue. So it have this request, then pending, how approved. This we have approved. This is fine. Yes, and this how we can complete. Admin portal. And it is not completed, so it will be rejected. AI, using AI that it That will is, we can predict. say AI you can add. And machine learning part you can avoid. Okay. AI you can keep. AI will predict that Not that is, yes. tomorrow that like it will. So you just skip machine learning. AI till AI is okay. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir.